In this lecture, we will discuss phenetic, phylogenetic, isolated, cohesion, ecological, and biochemical species concepts. Outlines. Today we will cover phenetic, phylogenetic, isolated, cohesion, ecological, and biochemical species concept. These concepts helps us understand how scientists define species from different perspectives. Lecture outcomes. By the end of this lecture, you will be able to define the major species concepts including phenetic, phylogenetic, isolated, cohesion, ecological, and biochemical concepts. You will also understand and explain how each concept works and differentiate between them based on their criteria and limitations. Finally, you will be able to apply and evaluate these concepts in real biological situations and develop a clear, integrated understanding of how species are defined in modern systematics. Phenetic species concept. This pre-Darwinian concept where species were identified mainly based on morphology and physical appearance. In simple terms, if two organisms look similar, they were considered the same species, even if their genetics were different. So, according to this concept, external similarity matters more than genetic relationship. However, this approach can sometimes be misleading because organisms may look alike but are genetically very different. तो जो फेनेटिक है ये चूंकि फेनोटाइपिक से निकला हुआ है मॉर्फोलॉजी से और ये प्री डार्विनियन कंसेप्ट था जिसमें जेनेटिक्स को इग्नोर किया गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी और फिजिकल अपीयरेंस को देखा गया कि अगर मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली दो ऑर्गेनिज्म लुक अलाइक एक जैसे दिखते हैं तो बस ये एक स्पीशीज है, और अगर इनकी जेनेटिक्स डिफरेंट भी है तो इसको खातिर में नहीं रखा गया, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई, सिंपली इनकी जो फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के उसको बेस बना के ये कॉन्सेप्ट बनाया गया. Phylogenetic species concept. This concept is actually a modern refinement of the evolutionary species concept, mainly associated with Samson. Here the focus is not just on appearance but on evolutionary relationships. In simple words, who is related to whom? According to this concept, a species is the smallest group of organisms that can be clearly distinguished and share a common ancestry. So remember this key idea: species are defined by their evolutionary history, not just how they look. This makes the phylogenetic concept more accurate and scientifically reliable in modern biology. So यहाँ पर मॉर्फोलॉजी नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेस बना के या एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का उसको बेस बना के स्पीशीज को डिफाइन किया गया. और ये असल में जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है उसकी थोड़ी सी रिफाइनमेंट उन्होंने की, जिसमें उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कहा कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है तो ये एक जैसे स्पीशी है या एक स्पीशीज है. आइसोलेटेड स्पीशीज कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, a species is made up of populations where gene exchange occur within the species but is restricted or prevented between different species due to reproductive isolating mechanism. So to make it more simple, members of the same species can breed and share genes, but different species cannot successfully exchange genes. For example, a horse and a donkey can mate, but their offspring will be a mule, which is sterile. So gene flow stops. Similarly, lions and tigers rarely interbreed in nature due to behavioral and ecological barriers. So remember this idea: species are separated by barriers that prevent gene exchange. जिस तरह इसके नाम से जाहिर है आइसोलेटेड मैकेनिज्म, तो आइसोलेटेड मैकेनिज्म ये है कि फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन ए है और ये पॉपुलेशन बी है,
पॉपुलेशन ए आपस में जीन एक्सचेंज कर सकते हैं, दे कैन मेट, बट और इसी तरह पॉपुलेशन बी आपस में मेट कर सकते हैं और जीन एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ये दो पॉपुलेशन आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, जीन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है बाय रिप्रोडक्शन। सो दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम आइसोलेटेड स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसकी कुछ और मिसालें जहां पर जीन एक्सचेंज हो जाता है बट आगे वो कैरी नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल इक्वस कैबुलस और इक्वस एसिनस, हॉर्स और डोंकी जो है दोनों रिलेटेड स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है बट दे आर क्लोज रिलेटेड। तो समटाइम दे कैन इंटरब्रीड, लेकिन इनका जो बच्चा होगा दैट विल बी म्यूल और वो स्टेराइल होगा, तो वो जीन आगे कैरी नहीं होंगे। सेम समटाइम लाइन जो है पांथेरा लियो एंड पांथेरा टाइग्रिस, वो भी समटाइम इंटरब्रीड कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते क्योंकि उनके बिहेवियरल और जेनेटिक आइसोलेशन है। सेम इज द केस ऑफ द डिफरेंट गैलापागोस फिंचेस। तो सिंपल की आइडिया ये हो गया कि एक स्पीशीज के मेंबर्स आपस में तो जीन एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पॉपुलेशन के साथ वो नहीं कर सकते, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम देम, एंड दिस इज नोन एज आइसोलेटेड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। Cohesion species concept, which was proposed by Templeton in 1989. This concept tries to combine multiple species concepts into one unified idea. It tells us that a species is not defined by just one factor, but by a combination of different types of cohesion. These include reproductive cohesion, gene flow, ecological cohesion, same habitat, and evolutionary cohesion, common ancestry. In simple words, a species stays together because its members are connected through gene flow, shared environment, and evolutionary history. So remember this key idea: cohesion keeps a species united as a single evolutionary unit. कोहेशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट ने एक्चुअली क्या किया, इसने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के आइडिया को, मेट रिकग्निशन आइडिया को, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट आइडिया को, इकोलॉजिकल और जीनोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, इन सबको मिलाकर एक अ, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया जिसको कोहेशन इसलिए कहते हैं कि इन तमाम को यकजा किया। उन्होंने ये कहा कि स्पीशीज क्या है, उनमें रिप्रोडक्टिव कोहेशन होगी, जीन फ्लो होगी विद इन द स्पीशीज, इकोलॉजिकल का मतलब होगा कि एक ही इकोलॉजी में रहते होंगे, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री होगी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी, इनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से कि वो एक जैसे होंगे, और ये मेट रिकॉग्निशन भी उनमें होगा कि ये एक दूसरे को मेट के तौर पर पहचान कर सकेंगे। तो इन्होंने इन तमाम कॉन्सेप्ट को एक करके एक उनसे बनाया कॉन्सेप्ट कोहेशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट। Ecological species concept, which was proposed by von Willen in 1976. This concept focuses on the ecological role of a species, basically how it lives and interacts with its environment. According to this idea, a species is a group of organisms that occupies a unique ecological niche and evolves separately from others. To make it more simple, each species has its own job or role in nature. For example, a polar bear is adapted to cold Arctic conditions, while a desert cactus survives in dry environment. Each occupies a different ecological niche. So here is the key point. Species are defined by their ecological role and habitats. तो इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर एक स्पीशी एक खास एडाप्टिव जोन में रहेगा, लाइक वो उसके थ्रू हम उसकी पहचान करेंगे एक खास एडाप्टिव जोन में, जो कि उसके लिए हैज अ यूनिक इकोलॉजिकल रोल, evolves separately from other lineages or uses specific resources, lives in a particular environment. तो अगर आप पोलर बेयर को देखिए, खास एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो कि कोल्ड है उसमें रहता है, सोर्स इज फूड क्या यूज कर रहा है, रहने के लिए क्या सोर्सेज यूज कर रहा है। द सेम इज कैक्टस, कैक्टस किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसका रोल, उसका जॉब क्या है, उससे हम स्पीशीज की पहचान करेंगे। बायोकेमिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, which was proposed by Florkin in 1964.
This concept focuses on the biochemical and genetic makeup of organisms, especially their DNA sequences and protein composition. According to this idea, organisms that have similar DNA sequences and similar amino acids patterns are considered the same species. In easy words, the more similar the genetic and biochemical structure, the closer the relationship. For example, all humans have very similar DNA, while lions and tigers show clear biochemical differences, so they are different species. So the key point is species can be identified at the molecular level using DNA and biochemical similarities. तो बायोकेमिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट सिंपल फोकस करता है ऑन डीएनए. जितना डीएनए स्पीशीज का सिमिलर होगा वो करीब होंगे और वो एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते होंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए में जो ऑपरेटर्स हैं, रिप्रेसर्स हैं, ये एक जैसे होंगे और वो एक जैसे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन सीक्वेंसेस बनाएंगे और वो सेम स्पीशीज होंगे. अब अगर आप डॉग से देखें तो इनके सीक्वेंसेस अलग होंगे डीएनए के, लायंस एंड टाइगर्स के अलग होंगे, ह्यूमन बींग्स के अलग होंगे. तो अगर हम मोलिकुलर लेवल पर डीएनए और बायोकेमिकल सिमिलरिटीज को देखें और उनको आइडेंटिफाई करें तो जितने ज्यादा सिमिलर होंगे प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स और फिर उनमें सिमिलर अमीनो एसिड बनेंगे तो उतने ज्यादा वो करीब होंगे और वो एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते होंगे. Thank you for watching. I hope this lecture made these concepts very clear and easy for you. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. Your support really helps the channel grow. If you have any question or need further help or clarification, please feel free to ask in the comment section. I will be happy to answer your questions. See you in the next lecture. Keep learning and stay curious.